जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर मोहम्मद अली शाह और आज मैं गुफ्तगू में होऊंगा एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनको तारुफ की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। जी हाँ, कल राजीव भरवन साहब, जो कि बिल्कुल एक हार्ड कोर पैराट्रूपर रह चुके हैं, देश की सेवा करी है, कई मर्तबा अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान की पे खेल कर, अपनी जान पे कूद पड़े हैं देश के दुश्मनों के सामने और मुकाबला करा है बड़ी बहादुरी से। और वो एक हार्ड कोर पैराट्रूपर ऐसे, तो उनकी पहली पैरा जंप थी, वो कैसी थी। और हम और बात करेंगे आगे जाके कि भाई, और मैं बताऊं आपको, खास बात तो ये है कि सर जब नागालैंड में थे उस टाइम पे मैं भी नागालैंड में था। उस पे उस किस्से में भी हम आएंगे, बट सर हंस रहे हैं। तो खैर एक गलत फहमी सर को बात हुई थी, बातें बातें में वो क्लियर हुई थी जल्दी से। वो अफसर दरअसल मैं नहीं था, वो अफसर कोई और था। तो तो खैर हम सर वहाँ पे बारिश बहुत हुई है और सर का इंटरनेट थोड़ा पैक्ड है, तो मैंने कहा मौके का फायदा उठाते हुए हमें 9 बजे आना था लाइव पे। मैंने कहा सर अभी आते हैं फटाफट। एंड आई कन्विंस सर थैंक यू वेरी मच एंड जैन सर, थैंक यू वंस अगेन फॉर स्पेंडिंग टाइम फॉर अस सर। नहीं, थैंक यू टू यू, थैंक्स मोहम्मद, थैंक यू सो वेरी मच एंड प्लेजर इज ऑल माइन buddy. सर शुरू से स्टार्ट करते हैं, आपको फौज में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली सर? और भाई यू ऑलवेज पैरा ऑप्टी सर? ऑलवेज ऑलवेज पैराऑप्टी यार। मैं फौज में आने का तो ये था कि मतलब जब स्कूल में थे यार, तब से ना जो स्क्रैप बुक बच्चे लिखवाते हैं एक दूसरे से, व्हाट यू वांट टू बिकम, व्हाट्स योर हॉबी, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड. तो आई रिमेंबर वी हैड अ रियूनियन आफ्टर 25 years, है ना. And when we had went and I was going through those scrapbook of boys and girls, so everywhere I saw उसमें लिखा होता है your aim. I have written कि I want to be an officer in Indian Army. So that was always in the mind since school days. Always means always here. And father was source of inspiration. He was in BSF. And ये इस हद तक था, मतलब फिर कॉलेज में गया, कॉलेज में एनसीसी ली. एंड कॉलेज में पहुंचने के बाद में मतलब इट वाज एट दैट लेवल. अभी जैसे कल मुझसे लोग पूछ रहे थे, आई वाज टेकिंग इंटरव्यू ऑफ फ्यू कैंडिडेट्स. So they asked me, sir, what should be my plan B? Now you tell me, it's your life. You must have planned something. If you're not planned, then I'm going to grill you. कहते सर अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो. मैंने पूछ ले क्या, मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू में कि what's your plan B? So they said, sir, what was your reply? My reply was very simple. I asked a question in counter to the interviewing officer. I said, what is plan B, sir? So he must have thought कि भाई what a dope, you don't know plan B. I was actually not aware. फौज के सिवाय कुछ सोचे नहीं. मैं सर what is plan B? ही सेज मतलब मान लो तुम्हारा फौज में ना हो. मैं सर ऐसे तो मानना बहुत मुश्किल है. मैं सर एक ही चीज सोची है बचपन से. मैं सर इसको मैं कैसे मान लूं कि मेरा नहीं होगा. कहता नहीं मान लो, सोचो एक बारी. मैंने कहा सर मैं कोशिश कर रहा हूं बट मेरा मन नहीं मान रहा ये चीज सोचने के लिए. तो देयर इज नो प्लान बी. कहता नहीं मान लो तुम मेडिकल में अनफिट हो गए. मैं सर नॉट पॉसिबल. आई हैड ऑलवेज बीन रनिंग क्रॉस कंट्री, डैम फिजिकली फिट. मैं सर मेडिकल में क्लियर हूं मैं बिल्कुल, मुझे कोई डाउट नहीं है सर, मैं हो ही नहीं सकता मेडिकल में आउट. कहते मान लो मेरिट में अगर आउट हो गए. मैं सर आई चेक्ड, आई एम इन द टॉप ब्लॉक एट द रिटर्न. मैं सर चांस नहीं है, मेरिट में नहीं जाऊंगा सर बाहर. कहता है मान लो यार. मैंने कहा सर नहीं मान पा रहा मैं. देन ही सेड कि मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है एंड आई एम गोइंग टू रिजेक्ट यू. नाउ व्हाट विल यू डू? आई सेड, मैंने कहा सर इन दैट केस सर आई विल वेट फॉर द ऑफिशियल रिजल्ट. वंस यू रिजेक्ट मी आई विल थिंक फॉर प्लान बी. आई वाज सो एडमेंट. मैं सर प्लान बी तो तभी सोचूंगा जब रिजेक्ट हो जाऊं, उससे पहले तो प्लान बी नहीं सोच सकता. एंड एक्चुअली में सोचा भी नहीं था यार. तो इट वाज एक्चुअली एट द पीक, है ना. डीएनए में ये था कि भाई फौज में ही जाना है, इसके सिवाय ऑप्शन कोई था ही नहीं मेरे पास. तो कभी सोचा ही नहीं यार. एंड आर्मी में जब गए, एज यू नो इन अकेडमी व्हेन दे गिव, तो इन माय ब्लॉक आई वाज इन द टॉप. सो आई हैड फिल्ड अप एसएफ, बट माय एक्यू वाज फ्रॉम अपना गुरखास दैट टाइम. सो ही सेड नो, नथिंग गोइंग. मैंने 3 बार फॉर्म भरा, तीनों बार ही तो tore it apart. He said, no, you are not going, you will come to Gurkhas. Fine, sir. So I left it blank. Actually, I left it blank. First, second, 3 choices. I had given no choice. मैं जहाँ भी होगा देखेंगे. मैं एसी में भेजेंगे, इन्फेंट्री में भेजेंगे, उसके बाद जाके ऑप्ट करूँगा. बट जाऊँगा उधर पक्का. And when I went, filled up the form, so I left all 3 blank, and he pulled me into Gurkhas. I realized that every unit is good here. You know, it is not the color of the beret or anything, but it is the officers, JCOs, and Jawan who makes a unit. And I realized that I was commissioned to one of the finest unit. And what a wonderful team of officers, JCOs, and Jawan I had. So it was a great learning. And uske baad mein, I always say life is running around in circles. If you want something, Shiddat say it'll come your way. So when I was due for my command, they had given me an option. Initially, there were 3 options कि आप wait करो, आप अपनी unit करोगे, आप बाहर जाना चाहते हो, आरआर, असम राइफल, और
some other option is there for you. So I had two options. One was Assam rifle, second was NSG. But I had my own reasons. And then all of a sudden they told me you are going for an airborne regiment. We want to pick you up. But the condition is you need to be volunteer, you need to be willing. So it was an ongoing conversation. I said, Managa, wait. I check your message box and SMS. I've written ongoing conversation. My bold capital underline. I'm willing, I'm volunteer. Now please post me there. So started on that note and जो चाहिए था वो मिला यार. Wow, that is so inspiring, sir. So inspiring. Sir, any particular memory of your academy days while training at the academy you would like to share? One is that. And secondly, मेरे को जब मैं अकेडमी में था सर मेरे को बहुत रिस्ट्रिक्शन मिले थे एंड मेरे को कहा गया था उस टाइम पे अरे कोई बात नहीं जो एसएफ में अच्छा करते हैं एसएफ में वो पैरा कमांडो बनते हैं वो रिस्ट्रिक्शन बहुत दौड़े हुए होते हैं अकेडमी में तो आई डोंट नो वो बात सच है कि नहीं है और अगर सच है तो क्या आपको अकेडमी में कभी पनिशमेंट्स मिली और अगर मिली तो कितनी मिली सर नहीं यार पनिशमेंट कभी भी सिंगल पनिशमेंट नहीं मिली इनफैक्ट मेरे को कम मिली इनफैक्ट ऐसा भी हुआ जहाँ पे पूरी एकेडमिक पनिशमेंट में थी इंक्लूडिंग सीनियर्स and I was the only guy whom instructor said you get up and stand on the side. So initially I thought pata nahi I must have done some goof up and then I realized कि no he don't want to punish me he said you stand there. So I was the only guy otherwise was then ACA AO everybody got rogered but I was not punished. मैंने बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल रखा है यार अकेडमी में होता क्या था सीनियर्स कहते थे कि भाई बडी पेयर को उठाओ फायरमैन लिफ्ट एंड पूरा ड्रिल स्क्वायर का और वो पूरा चक्कर लगाकर यू विल कम बैक टू द पीटी ग्राउंड सो आई इमीडिएटली यूज्ड टू पिक अप माय अपना बडी पेयर एंड आई यूज्ड टू गो एंड आई यूज्ड टू फिनिश फर्स्ट सबसे पहले खत्म करके आता था तो मुझे लगता था उससे मैं फिजिकली फिट रहूंगा एंड अकेडमी में कंसेप्ट होते हैं यू कम फर्स्ट एंड यू विल नॉट बी टैक्स्ड एंड दिस प्रिंसिपल आई हैड अप्लाइड एवरीवेयर इन कमांडोज आल्सो जैसे मान लो उसने बोल दिया 1000 पुशअप तो 1000 पुशअप तो यार इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि विद बैटल लोड है 32.5 केजीज आप लगाओ तो लोग क्या करते थे वो सब गर्दन को नीचे ऊपर ऐसे करते थे तो आई रियलाइज कि रादर देन डूइंग है ना गर्दन ऊपर नीचे एंड टू शैम इट आउट व्हाई नॉट डू एज मच एज यू कैन सो पहले हाथ पे लगाया हाथ पे नहीं हो पाया नकल्स पे लगाया नकल्स पे नहीं हुआ तो एक हाथ को रेस्ट दिया दूसरे हाथ से किया बट इंस्ट्रक्टर यूज्ड टू नॉट यस ही इज डूइंग इट वेरी रिलीजियसली so he always used to tell me commando get up gotta stand on the side he used to ensure that I get proper rest and he said sir jo commando acha karta hai we don't want him to get harmed because you will be going for the competition for best student and best in physicals so they used to take care so concept हमेशा रहा whether it was a punishment रगड़ा or anything the idea was to do best in that because मुझे ये था कि जितना आप रगड़ोगे ना अपने आप को और जितना बढ़िया करोगे firstly ना mentally you're going to become stronger and जितना physical में आपको रगड़ा लगेगा आप उतने ज्यादा polish हो जाओगे so punishment थी चाहे पट्टी परेड था whatever I always used to finish first and as a reward everybody used to tell me कि okay Bharwan चढ़ के go and relax right sir तो there is no point यार रात भर रगड़ा खाने के लिए है ना मैं सबसे बढ़िया करके दिखाते हैं and one thing more what you said about the SF this thing I realized in academy कि SF is not about anything but it is about the mindset बहुत सारे लोग हैं जो एसी में है या आर्मर्ड में है इंजीनियर्स में सिग्नल में है बट देयर आर गाइस एक्सेप्शनल दे वॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है ना एंड जिसका माइंडसेट सही जगह है ना ही डोंट रिक्वायर एनी पर्टिकुलर कलर ऑफ द मरून यू नो एनी स्पेसिफिक बैज और एनीथिंग ही विल प्रूव हिमसेल्फ विद हिज माइंडसेट एंड ही इज एसएफ एंड ये मैं बहुत जल्दी सीखा था आई रियलाइज दिस थिंग एसएफ जब असम राइफल में व्हेन यू वर आल्सो पोस्टेड देयर कि असम राइफल की फौज है मेरे लिए तो मतलब इट इज एज गुड एज स्पेशल फोर्सेस हालांकि 60 साल तक लोग काम करते हैं राइफलमैन कैन बी विद द एज ऑफ 40 इयर्स बट पहली बार मैंने ऐसी फौज देखी यार जो कहीं पे भी जा सकती है किसी भी जगह हिंदुस्तान के कोने में एंड दे कैन ऑपरेट विदाउट मैप और एनीथिंग बिकॉज देयर ग्राउंड नॉलेज ऑफ टेरेन वाज सो वेरी स्ट्रांग कि कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई कि डिपेंडेंसी जीपीएस या मैप के लिए दे न्यू बैकवर्ड्स history has been testimony like 7 Assam rifle if I remember my facts clearly 7 Assam rifle पहले क्या होता था rotation पे 2 Assam rifle unit used to be deployed in J&K sector so long time back before 98 it was I think in 90s की बात है 7 Assam rifle was posted there based on a surgical import one night operation they had conducted and they had knocked down I think more than 50-60 militants terrorists in one night operation not even a single casualty of that unit. Yes, 7 SM rifle. 91. 91, na? Haan. So that was the unit, yeah. Imagine, this was a yes. in Thobal, sir. I know what you're talking about. I know what you're talking about. The unit was posted in J&K, not in Northeast. Okay, J&K.
In J&K, while this unit was deployed, they knocked down more than 50 terrorists in one night operation without sustaining any single casualty. That speaks volume about their professional competence. मतलब इतने ठोक दिए थे रात रात में, 2 गाड़ियों में मतलब बॉडी कम पड़ रही थी लाने के लिए टेररिस्ट की. So I realized, what a great force here. And within a battalion, I realized within a company, why to talk about the battalion? Within a company, you got a mini India. आपके पास में मणिपुरी, नागालैंड, पंजाबी बोलने वाला, खालसा, मद्रासी, तमिल, बिहारी, उड़िया, all over India, you have got a set of boys. हर तरह की भाषा बोलने वाले एक कंपनी के अंदर है बंदे. अगर ऐसे भी कहीं ऑपरेट करने जाती है तो देयर आर लिमिटेशन. आपको एक अच्छा इंटरप्रेटर चाहिए होगा, विच यू बिड फ्रॉम द ब्रिगेड हेडक्वार्टर और सम कंपनी. असम राइफल चलती फिरती अपने आप में यार एक बड़ी तगड़ी पोटेंट फोर्स है. वी यूटिलाइज इट प्रॉपर्ली. फर्स्टली देयर सेनेटल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, उन लोगों की टेरेन पे, लोगों पे उनका कस्टम्स एंड एवरीथिंग बहुत तगड़ी पकड़ है. बिकॉज 40 साल बिफोर द रोटेशन कंसेप्ट स्टार्टेड, उससे पहले तो वो एक ही जगह रहते थे फॉर 40 years एंड दे न्यू एवरीथिंग. एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग. ये कैसी फौज है जिसको मतलब मुझे लगा कि इनको ना पंजाब में भेज दो, राजस्थान भेजो, हरियाणा, मणिपुर, त्रिवेंद्रम, यू सेंड एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. आपको कोई इंटरप्रेटर चाहिए, इट इज रेडीली अवेलेबल इन विद इन द कंपनी. सारे एक भाषा बोलते हैं. देयर ओनहोमी एंड रेजिमेंटेशन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड एक्सपीरियंस का तो कोई सब्सिट्यूट ही नहीं है यार. मतलब अगर 40 साल का अगर वो राइफलमैन भी है, सो व्हाट, राइफलमैन है वो अलग बात है, रैंक है, बट ही इज कैरिंग ए 40 years एक्सपीरियंस. कहाँ मिलता है इतनी आसानी से? In the hierarchy, even the journals have got that experience. But यहाँ एक जवान है who is carrying 40 years of experience. So I had a lot of respect and I realized, this is another special forces, Assam Rifles. So I had a lot of good learnings from there. And there I realized on my first posting in counterinsurgency, special forces is all in the mindset. Right. Sir, you've spoken such kind words and such good words and from your heart about Assam Rifles, मेरा दिल खुश हो गया वाकई में. Sir, मेरा एक सपना था मरून बेरे पहनने का, ठीक है ना? मगर मैं मरून बेरे तो खैर पहन नहीं पाया, because as you said in academy, what happened was my battalion commander was from artillery, Colonel Okay. Sagar. So I and my father was from the artillery, so I got blackmailed, emotionally blackmailed into joining the artillery. और मेरे को ये कहा गया था कि आर्टलरी से तुम फिर भी ऑफ कर सकते हो एसएफ के लिए या पैरास के लिए या पैरा आर्टलरी के लिए ही सही, मगर वहां से अगर तुम प्रोबेशन में फेल हो गए तो तुम वापस नहीं आ सकते आर्टलरी में. ये बड़ा वो है, पता मोहम्मद, यू दैट्स द वेरी राइट थिंग. होता क्या है, मतलब देखो, अगर आप जाते हो यूनिट में, 2 चीजें हैं. इनिशियली यू गो समवेयर, आपको एक्सेप्ट किया किसी यूनिट ने, एंड आप वहां पे गए, एंड जाने के बाद में आप वहां पे जाने के बाद बोलते हो कि आई वांट टू गो टू पैराएसएफ और एनी अदर थिंग फॉर दैट मैटर. तो होता क्या है, एक जनरल परसेप्शन बनता है लोगों का. वो बोलते हैं कि यार ही डोंट वांट टू स्टे हियर इन द फैमिली, है ना. समटाइम्स सीओ डज नॉट अप्रूव ऑफ इट, एंड समटाइम है ना, एक एनवायरनमेंट में एक मैसेज आता है कि यू वांट टू गो आउट ऑफ द यूनिट. So thereafter, if somebody goes and he clear the probation, then it is fine. But अगर नहीं होता किसी वजह से, and then you come back to the parent unit, so लोगों का perception होता है कि यार ये तो यहाँ रहना नहीं चाहता था, मजबूरी में आया है. So वो एक बड़ा caste 99 अपना 69 पोजीशन हो जाती है लोगों के लिए, caste 22 कि भाई अब क्या. But that not that everywhere environment, कहीं पे acceptance level high होता है, कहीं low है. दिल की बात निकल गई. Caste 20 सिचुएशन को आपने बोला, दिल की बात निकल गई. Cash 22 situation को आपने बोला है, cash 69 position. I noticed that. I said, but then I committed. I said, no, my maths was always fuck all. It was a judgmental error, not an intentional error, buddy. My maths was fuck all. Sir, tell me about your probation, because ultimately से आपको ये खुशी की बात ये है कि मैंने मैरून बेरे पहनी, मैंने ultimately, मगर फौज में रहते हुए नहीं पहनी. फौज के छोड़ने के बाद, जब बाहर निकलने के बाद, शॉर्ट सर्विस कमीशन करने के बाद, मैं एक वेब सीरीज रहा था अवरोध, सर्जिकल स्ट्राइक्स पे है, उस पे मैंने पैरा कमांडो की वो मरून बेरे पहनी है. आई फेल्ट वही मैं जिंदगी को जीना चाहता था, वो मैं फाइनली रियल लाइफ में रियल लाइफ में नहीं जी पाया, रियल लाइफ में जी रहा हूँ. सर, टेल मी अबाउट योर प्रोबेशन पीरियड. सर, यस, प्रोबेशन पीरियड में यार होता क्या है, सी देयर आर 2 things. One is the physical aspect and second is the technical training. Now both are important and both are rigorous. पहली बार मैंने देखा कि जो उस्ताद हैं, जो हमारे उस्ताद थे, and I have seen 2 मैंने लोग उस्ताद देखे. एक वो जो पैरा पैकर्स होते हैं, दूसरा वो जो अपना आपको ग्राउंड ट्रेनिंग देते हैं अबाउट द जंप्स एंड अदर थिंग. एंड उन लोगों को देख करके मुझे ना ये चीज़ रियलाइज हुई. मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था जहाँ पैरा पैकर है, मैंने देखा कि पैराशूट को कैसे पैक किया जाता है.
प्रोविजन से पहले वो आपको बताते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है ना, पैराशूट हाउ इट इज पैक्ड, दे टेक यू टू द हैंगर्स, दे शो यू। तो एक पैराशूट को टांग करके उसको कैसे साफ किया जाता है, कैसे पैक करते हैं, आई रियलाइज्ड यार इट्स नॉट इजी थिंग। एक शू में लेस डालने हो तो आपको दिक्कत महसूस होती है, एक पैराशूट को गोली की स्पीड से पैक कर देना, इट रिक्वायर ट्रेमेंडस आर्म स्ट्रेंथ। वहां पे जब लोगों से मैंने हाथ मिलाया तो आई रियलाइज किया ना कि जिन लोगों से हाथ मिलाता हूँ तो हाथ लगाने के बाद पता लग जाता है उसके हाथ में हाथ मिलाते मैं, यू आर ए पैरा पैकर, दिस ये सब पैरा पैकर मैं, गुड, बिकॉज द मसल्स है ना, यू सी योर हैंड्स आर डैम स्ट्रांग। तो उन लोगों ने सिखाया एंड देन रियलाइज हुआ कि भाई अच्छा ऐसे होता है। हमारे यहाँ ड्रिल थोड़ी अलग होती है एज कम्पेयर टू पैरा एंड एसएफ। हमारे यहाँ पे होता है कि जो बंदा पैराशूट पैक करता है, इनिशियल 14 जंप्स ही इज मेड टू डू द जंप्स विद द पैराशूट ही पैक्स फॉर हिमसेल्फ। ऐसे में पैरा में ये होता है कि एयर फोर्स का बंदा है, ही कम्स, ही डू द लॉग एंट्री कि मैंने आज 5 पैराशूट पैक कर दिए, क्लोजेस द लॉग एंड गोज ऑफ, बट ही डोंट जंप फ्रॉम दोस पैराशूट्स। बट इन आवर गाइस दे डू अपना पैराशूट पैकिंग, दे लर्न इट फॉर कंप्लीट 1 ईयर and then they pack the first 14 parachutes, and then he is made to jump from those parachutes so that he realizes ki what he is packing and what he is doing, what it can cost actually. So uska involvement jo hai na, that is unmatchable here. The journey वहां से शुरू हुई थी, and then उसके बाद में physicals. I had a very good commander with me, and a Brigadier Santosh Group Sena Medal Bar, and Santosh sir was great man. तो हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए गए थे, couple of officers were there and he was from Marathas, so he said कि I'm taking over as the commander of the force, I need to be grilled, I need to be going through these paces. So we were there and he said कि यार let's do one thing, and we are students here, removed our rank, the ranks are here, we are not in the capacity of the commanding officer or commander, we are students, अब जितना रगड़ सकते हो रगड़ दो, whatever is the drill, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भाई कमांडर साहब है तो थोड़ी ज्यादा सहूलियत होगी, है ना, कमांडिंग ऑफिसर है तो ज्यादा सहूलियत होगी, है ना, और जवान को ज्यादा रगड़ दो, नो, एवरीबडी विल बी बुचर्ड इन द सेम मैनर। उसके बाद में उन्होंने जलवा दिखाया एंड दे टुक इट क्वाइट सीरियसली। उस्ताद ने बोला गुड यार, कमांडर कह रहा है कि भैया रैंक की परवाह मत करो, रगड़ दो, दिल पे ले ली उन्होंने, और भाई जो सॉलिड रगड़ सकते थे ना रगड़ दिया उन्होंने। मॉर्निंग very physical, tough अपना rigorous runs, then उसके बाद में evening again the same exercise, and throughout the day you are learning the technical thing, confidence building exercises, other things. They keep making you jump from the ramp, you are handling various contingencies, but देखने में तो बड़ा सिंपल लगता है कि आप आ रहे हो, खड़े हो रहे हो, सुन रहे हो कुछ ब्रीफिंग, जंप कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, बट दोस निटी-ग्रिटीज ना, आप एक रैंप पे चढ़ रहे हो, बार-बार जंप कर रहे हो, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी आगे, कभी बैक, it is so very rigorous. When you do ना, you lose senses of the direction, and your body बिल्कुल दिमाग साथ छोड़ देती है यार। Physical exertion too high, ठीक है? And then उसके बाद technical part. Physically, when you are exhausted, you need to be in a very captive कि yes, what is being taught to you. You miss one part of the briefing, then जब आप बाहर निकलोगे ना, तो फिर आपको पता नहीं होगा how to handle that contingency. Because इतनी सारी contingencies होती हैं, you jump out of the aircraft, your canopy does not get deployed. One. दूसरा, you jump out of this thing and you have a candle position, मतलब पूरा नहीं खुला आपका पैराशूट, बट कैंडल की तरह ऐसे होते हुए आ रहा है। There are situations where you jump out of the aircraft and somebody comes and lands on your parachute, ठीक है? वो पैराशूट पे आगे बैठ जाता है तो your canopy does not get deployed. आप नीचे जाते हो, फिर आप दूसरे के पैराशूट पे बैठ जाते हो, and आप इसी तरह से चलते रहते हो नीचे तक। Sometimes it is a upside down position. You jump out of the aircraft and you are down, hanging with the head down and legs up. And there are people with a Caesar on the top and they're looking कि भैया इसने गलत ड्रिल करी, रिजर्व पैराशूट अंदर होता है, थोड़ा सा हाथ अंदर गया तो यू जस्ट चॉप ऑफ द कॉर्ड। उसके बाद में कमांडर हो, कर्नल हो, भैया मेजर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर गोइंग डाउन, यू आर डेड, बिकॉज ना दे कांट अफोर्ड कि पूरा चॉपर एंड स्टिक ऑफ 42 इज गोइंग डाउन बिकॉज ऑफ वन गाय। तो ड्रिल करके बताता है कि भाई बाहर की तरफ हाथ लेके जाता है, पुट्स हिज हेड ऑन द हेड कि आई एम इन सेंसेस, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग नेस्टी, अदरवाइज पीपल आर कॉन्स्टेंटली ऑन द वॉच। ट्रेनिंग है यार, इट इज मतलब पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है ना, एंड बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस एंड सो मेनी अदर थिंग्स, आपकी जो टाइमलाइन है कि इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, वो कभी हो नहीं पाता। समटाइम इट गेट्स स्ट्रेच है ना, 15 अदर डेज, 20 अदर डेज, फ्लाइट अवेलेबिलिटी, वेदर कंडीशन, सो मेनी थिंग्स, इट इज वेरी रिग्रेस यार। बट देन वही है, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, मजा तो है फौज में, है ना। बाय द टाइम यू डू इट आफ्टर एकेडमी डेज, इट्स अ ग्रेट फन यार। And again, as they say in academy, अकेले रगड़ा लगता है तो दिक्कत होती है, but when you're doing in a group ना, you enjoy it. So I also had a ball of a time here, had a great time. So that is very nice, sir. Sir, in Assam Rifles, when I was there, I got the opportunity to lead the Assam Rifles marching contingent.
Yeah, on I know. Rajpath. हाँ, हाँ, और हमारे बिल्कुल आगे था बीएसएफ का कंटेंजेंट. हाँ, And since your father was in BSF, sir, और BSF की जो ऊँट थे, हाँ. we were right behind them. So it was actually a very difficult march to actually endure. कि बिल्कुल आप ऊँटों के पीछे पीछे जा रहे हैं, and there were cleaners on the sides. Because ऊँट, the camel will give their droppings, and we have to march over that. And we can't, obviously, we can't follow boots. So जो cleaners थे बिल्कुल पीछे, they were picking up on the spot. Sir, talking about BSF, sir, you and Major Gaurav Arya's father also was in the BSF. तो Yes. आपका कभी फुटबॉल फील्ड पे भी you had interaction, and Yeah. he has been a very good horse rider. I know this. So tell me about your interaction with him, sir, on a football field or whatever. Yeah, I had gone to play lawn tennis and उस समय कोई आया नहीं था. It was in BSF Academy Takenpur, है ना? So that time I was not aware, but my father recently got posted, so I had gone there. So we had a small interaction in the football field, है ना? He just So asked me, "Name, who are you?" And I said, "Man, I'm so and so." And Gaurav Arya sir को पता नहीं होगा what had happened that day. मैं छोटा था खैर उस समय. I was in class I think ninth or something, 10th. Yeah, and he was senior that time. So मैं अकेले ही वहाँ पे खेल रहा था and he had kicked my football है ना other way around दूसरी तरफ. So I said, "Why did you kick my football?" Yeah. He said कि you don't play here, you don't play there. फिर मैं वापस लेके आया इज्जत में, I'll play here only. कहते you go, मैं no, I'll not go. ठीक है. Then उसके बाद में he was playing, so then I came in, then I kicked the football other way around and I ran away. मैं ठीक है, tit for tat. He was senior to us, है ना. पता भी नहीं होगा सबको, तो याद भी नहीं होगा, है ना, because it was just one time we had interacted on the football field. So I met him. But then I realized I located with उसके बाद में I don't know. He was posted in JANK for some time. जी सर, जी सर. हाँ, so when I got commission, I think probably, and which year he got commission? So he's SS 57. So 57. वो हाँ, he must have got commissioned in 2000 नहीं 94 के आसपास लगभग. हाँ. मैं लगभग. शायद वहाँ पे एक बारी I saw him. I had gone for some official work, तो शायद मैंने देखा होगा वहाँ पे. Very short interaction. उसके बाद में कभी मिला नहीं मैं सर से, है ना. Sir, sir, it's been such a wonderful time being in conversation with you. और आपके साथ मैं बातें करता रहूं वो अलग बात रही. बातें खत्म नहीं होंगी. And I reckon कि आपके यहाँ का इंटरनेट थोड़ा shaky है because of the rain Yeah, and the weather over yeah, there. real bad. Sir, But sir, we'll thank catch up you very sooner much than for later. giving We out have a time, sir. catch up. And before we part ways, sir, any last message you would like to give to the youngsters who want to join the para SF? हालांकि सर, like for I don't know if you know the story. मैं फौज में ज्वाइन करने नहीं आया था. मैं ओटीए फौज आर्मी ज्वाइन करने नहीं आया था. मैं ओटीए एसएफ ज्वाइन करने आया था एक्चुअली. वो अलग बात है कि what did not happen. So any message to youngsters who want to join the SF in particular, sir? Here, you've given me the liberty. I'll convey two messages. You know? One for the youngsters, those who want to join para and para SF or any other regiments. वो बहुत बार की दूर है. One step at a time. The first focus should be on the exam. Exam clear करने के बाद में the idea should be to perform well in the SSB. And आप SF में जाइए, जहाँ पे भी जाइए, as I said ना, it requires a strong mindset, a disciplined mindset. तो ऐसा नहीं है कि आप SF में जाकर के कुछ अलग से एकदम से कर दोगे. In daily routine, 24 hours, they should lead a well-disciplined life. They should have good control over their thought, their threshold, the decision-making capability. ये तो रोजमर्रा की जरूरत है आपकी, लाइफ में इतनी सारी चीजें आती हैं, तो they should develop a good disciplined life, follow a good routine, and develop a good strong mindset. That is very important. अगर वो होगा तो चाहे SF हो, चाहे जहाँ पे भी हो, they will do very well. That is one. बिकॉज ज़्यादा लोगों को मैं देखता हूँ वो कह रहे हैं कि सर मैंने यहीं से ऐसा कर देना है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला. बट अगर दे डेवलप ए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ना, वो अपनी जगह मिल जाएगी. बिकॉज फिर मेरिट में भी आना पड़ेगा आपको, अपने ब्लॉक में होना चाहिए, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट. अदरवाइज अप्लाई किया एसएफ के लिए एंड यू लैंड अप इन एएससी. तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. द एंटायर फोकस शुड बी टू परफॉर्म वेल. You perform well, one is definitely will get his due. Second thing, one sensitive thing here, what is currently going on in Manipur. Since we had been there, I had served there, and through a close friend, I got to know, and then I went to the media and I see, the entire Northeast, especially Manipur, is burning here. And amidst all this, there are a lot of, hate speeches and other thing, I see. The actual cause people are not aware. Maybe, it is just a gimmick. People have got their vested interest. Maybe it has got political angle. There's so many things. But, I've seen a time in Northeast where,
Metis, the Hindu Manipuris, they used to settle in the valley floor. The Nagas, they used to stay along the foothills, and Cookies, they used to stay at the hilltop. They had their own particular zones. I'd never seen anybody entering into each other's territory, causing any kind of ill kind of act toward anyone. They used to stay in complete harmony. But today, the kind of the thing I'm hearing, what they're doing, killing this thing, shoot at sight orders, and it's horrible. I think this is the time more than anything. Two things I make a public appeal to people. One, जैसा पहले था, if they could stay and set a good example when technology and resources were not there, rules were very strict. Nagas, Cookies, and Manipuri. If they could live in harmony that time, they can do it now also in much better manner. That is one. They should not fall prey to any of thing, whether it is political or any other thing. They should stand by each other. This is the time they should prove that yes, Northeast is one. And second thing is, there are many people on the social media, really jokers, in the name of different thing with different funny names, including special forces, whatnot. There are a lot of people who are spreading hate speeches. No, absolutely, people need to be more responsible here. Just for a couple of few more likes, few more comments and views, one should not sell himself in the market. People life matters. You cannot just send one clip and create more add fuel to what situation is going on. If you search, there are a lot of people I've seen, whether it is Insta or YouTube, people are just doing editing and putting anything and everything on media. It is going to make situation bad to worse, highly avoidable. Since you had given me a platform, I thought I must make an appeal for this. And it's bad. If we can contribute, we must contribute to bring some good thing to the situation which is going on, and to improve this rather than being a catalyst and to further compound the situation. That's not done. That's correct. Very well said by you, sir. Sir, about 2-3 nights back, at around 10:15 ke aaspas. Hello, sir, your internet is, are you there? Yeah, I'm there. I'm listening to you, buddy. Sir. So about 3 nights back at about 10:30 at 10:15 at night, a coursemate of mine, Major Jaljit, I'm a former army officer now. He's in Bangalore. He called up. He said he showed me, sent me images. ये 3 रात पहले की बात है ये 3-4 रात almost. He said Manipur is burning यार. It's तुम burning. टीवी पे बोलते हो. He started accusing me. He said तुम टीवी पे बोलते हो, तुम क्यों नहीं बोल रहे इसके बारे में? And you speak on Russia, Ukraine, and China, Taiwan, and national security and all. This is part of national security. Yes, Why have very you not much. been speaking on this? Had this been Yeah, said, but- you were straight away. जब ऐसा नहीं है, देखो मेरे ऊपर नहीं है. I give the channel gives me a topic और इस पे मैं बोलता हूँ. But ऐसा है तो let's do it straight away. So I called up former DG Assam Rifles, Lieutenant Shocking Chauhan. Very nice of him. Very gracious of him. He graced the moment for about 15 minutes. Why YouTube pe foreign? And though he had come to Delhi, he had just landed to attend a colleague, his soldier's daughter's wedding. So मेरे को बड़ी खुशी हुई कि सर जनरल साहब No, nice, sir. एक जवान के बेटी की शादी के लिए आए हैं. बड़ी अच्छी बात है. It's a very good बिल्कुल gesture. अच्छी बात है. Because I've seen my father do the same. And so I spoke to him. I asked him, sir, what is the basic issue? So he explained the basic issue, kya hai, kya nahi. He said, okay. And so I sent that link to all the news channels where I speak to the chief editors, to everyone. And next day, Jaljit called up. He said, thank you very much for this. Because they need a peg. The media channels needed a peg. कि कहाँ से वो, and sir, अभी वो सब जानते, thankfully. Everyone knows. And I told them, I called up these people. I said, तुम लोग यार कर क्या रहे हो? You talk about national security. This is part of national security. Manipur is Very burning. much. यार अगर अपना घर सेफ नहीं है ना तो let's not talk about big things. That's why I keep telling ना. I don't believe much in strategical things है ना कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है. पहले आप अपना घर संभालो. There is a lot of homework we need to do at the home front. And यार कमाल की बात है. मतलब I always say Northeast people are great. There is a lot of good values. They have been raised with. अगर वो पहले ठीक से रह सकते थे मिल करके तो अभी क्या हो गया ऐसा यार कि नहीं रह पा रहे. This is high time people should come on the road and to prove their solidarity. We are standing by each other. If they want, they don't require armed forces to resolve this. They don't require politicians. All they need is they just hold each other's hand, come on the road and say we are one. It is as simple as that. But I'm surprised, not movement. Everybody is trying to handle it in their own convenient ways. But sir, I'm really glad you conveyed this message. I'm really glad because when it
a message like this goes across from an influencer like you, I'm sure it will make some difference somewhere in the universe. That frequency would be caught by somebody somewhere, and I'm sure it will make a difference. So I see some very interesting background. सबसे पहले माफ की जाते जाते मेरे को ये बताएगा आप, ये खुकरी के बारे में बताइए. वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल खुकरी यू हैव ओवर देयर सर. यार फौज से आने के बाद में ना, आई हैव गॉट नथिंग विद मी. दिस इज द ओनली सोवनियर आई हैव केप्ट इन माय हाउस. Only one. I don't have anything, means anything, from my parent unit or anywhere. I have got only two things. One is a huge photograph of 10 by 8 where all my troops, men, everybody is standing and wearing maroon beret and goggles. That is one, so that I can see their faces and remember them in my prayers every day. That is one. Although I don't require a photograph. And second is this cookery here. It has got a very, very interesting story behind this. And this is very close to my heart. I'll tell you, yesterday I was telling people, and there was some SRT, and I was correlating with this, and I told them, this cookery has been given to me by a brother officer. His name is Colonel Rajesh Kondal, 611 GR, commanding officer. He was across the river staying there when I was commanding my battalion. So I got a call from him. He said, tomorrow I'm going to assume my command and I want to come to your Gompa to offer my prayers. You are more than welcome, brother. So he came, we made the arrangements, and then there was a time when lady along with the kids was visiting Rajesh. Day prior to that, they were in my office, in my mess, and we had a party, get together. Next day in the morning, when I was doing some work, immediately Jay came to my office and he said, "Sir, you got to know about this, my what?" He says, "Ki Mrs. Connell met with an accident." The what? मैं फटाफट हॉस्पिटल में चेक करो, व्हाट आर द ब्लड ग्रुप, वेयर आर दे सेड कि फील्ड हॉस्पिटल में लेकर के आए. मैं चेक करो ब्लड ग्रुप क्या है, जितने लोग हैं पूरी बेटालियन दूसरी तरफ फॉलो करो, ठीक है. एंड आई रश टू द हॉस्पिटल. व्हेन आई रीच देयर, आई सॉ कॉन्डल वाज स्टैंडिंग इन वन कॉर्नर होल्डिंग हिज बेबी डॉटर, जिसके एक पैर में जुराब थी, दूसरे में नहीं थी. द सन एंड लेडी वर इनसाइड. It was terrible accident. The entire vehicle went down. And पूरे वहां से लेके हमारी लोकेशन के बीच में, it was good plain road. There was only one stretch of 40 meters. And it was not a Fauji vehicle, it was a van. Some ex-Ladakh scout अपना guy who was old, he was running that vehicle, so he was driving that vehicle. I don't know what happened, he overslept or something. He took the vehicle down. And probably जब गाड़ी नीचे जा रही थी, मैम ने बच्चे को जैसे भी पकड़ा, that kid was this thing, she was saved, but ma'am had a terrible accident. That thing was flashed. You pick up some pan from this thing, it was as bad. Rajesh said कि सर सबै ठीक हुन्छ, don't worry, सबै सन्चै हुन्छ, केही पनि हुन्न, कुछ नहीं होगा, nothing will happen. But I went inside and I saw doctor was there, Colonel Rajesh. I said, Rajesh, what happened? And I saw he was so tired. He said, sir, I don't know what to do. The entire thing was, I can't even explain. It's not a proper platform. And I know it was a no-go situation, clearly what I saw that day on the table. And then Rajesh told me, sir, I feel total failure. Now what happened? He said, sir, his unit had gone to Siachen. He said in Nepalese to me, sir, मैं पूरा पोर्टल ले त्यहाँ लिएर गयो सर, एक पनि मान्छेले चोट लागेन, तर म आफ्नो परिवारलाई सम्हाल्न सकेन. That means कि sir, I taken the entire unit to Siachen and पूरी मैं unit को लेकर के गया, इंडक्शन डी इंडक्शन एक साल पूरा लगा के, एक बंदे को सर खरोंच नहीं आने दी मैंने. And sir, मैं अपनी फैमिली को नहीं संभाल पाया सर. I'm feeling so bad. I feel, man, no, you're a great man, you're a commanding officer, बहुत अच्छा काम किया तूने. And that guy, yaar, in spite the best of the efforts, we lost the first lady of the unit. And then son was saved, although he had some injuries. And Rajesh, for the last rituals, he had gone home along with the body. Now, first thing when I came back to the unit, I said, man, no rituals, no party, no nothing. Everything cancelled because I was on way out. I was moving out for a few days. मैंने कहा अगर हमारे घर के अंदर, हमारे पड़ोस में अगर ऐसा कुछ है, and we are having party, man, that's not my way, नहीं कर सकते. Everything stands cancelled. Nothing will happen. I will just address my troops and I'll leave. So twice adjutant, SM, a lot of people, they came, no sir, we had done preparation, we had done this, that, and we must do it. Now you are going. So what? Not a big deal. I'll go in peace, but if you do anything, I'm not going to participate. And I seized everything in my unit.
Now, when all this was happening, and I seized and passed orders, कि unit में कुछ नहीं होगा, no any kind of tamasha. I just want to leave after addressing. Amidst all this, then there is one young officer who comes from his unit, 611 and he said, Jain sir. Yes. He extended me a card. What is this? He said, sir, this is a card for you. For what? He said, sir, for your dining out in our mess. Are you nuts? You know what happened in your unit? CEO lost his wife. The first lady, man, it's a big loss. Right? Not possible. He says, sir, it is going to happen. If you don't come, we'll pick you up and take to the unit. Okay? Now, how can you even think of this? They said, sir, CEO told us. These are the orders from Colonel Rajesh that it need to be done. He said, you must ensure and a proper dining out for Colonel Rajeev. दो चीजें समझ में आई यार. पहला मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ कमाया लाइफ में. How can you मतलब imagine a scenario where somebody has lost his life partner and such a this thing and kids are not well, somebody still in that much senses he says sir का dining out proper तरीके से होना चाहिए. And that too I was not in the brigade, it was separate league. I was in separate some other force. Still somebody had gone out of way. Imagine दूसरी चीज ये देखिए यार कि that man is a man of what stature. कितने लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं कि खुद तकलीफ में है बट दूसरे के लिए बोल रहा है कि करना. And Rajesh ensured that. Then I went to that unit. I attended dining out, and it was a proper farewell to me. And I came with a very heavy heart, and मैं हमेशा बताता हूँ लोगों को, you know, Rajesh उसके बाद में, he took posting to Chandi Bandar Command, CBRN branch. He came, he was very high profile, doing very well for himself. ठीक है. But फौज ने आगे कैसे देखा उसकी प्रोफेशनल से पर्सनल रिक्वायरमेंट होगी, बहुत कुछ चेंज हुआ वो लाइफ में. But what a great man, what a simple man, who going through so much and he still had not forgotten to give me respect. I don't know, yeah, people have got that much jigra. One should have a large heart. So that is the story behind this. And wherever I go, I keep this thing with me. And the only souvenir I kept, Rajesh, if you are hearing it, I love you, man. You are a good man. You are a great father. You were a great husband. And people in an army, we require more people like you. So that's why तूने पूछा तो यार मैंने बताया Mohammed, but this is the only souvenir I keep with me. Nothing else. I don't believe in souvenirs. I don't believe in any other thing else than returning gift. I believe in people. That's a very emotional story. It's a very, very emotional story that you shared. So I know it's a. I can well imagine, sir. I can well imagine, sir. It only shows that how much people respect you as an officer, and even after your service, sir. I mean, आपका जो नाम है ना, जो आपने इज्जत जो नाम कमाया है, your soldiers, your juniors, your seniors, your colleagues, they swear by your name, sir. Sir, I really thank you for your time, sir, wholeheartedly. It's been Thank such you a so very pleasure, I tell you. Such a pleasure, Thank sir. you so much. Same here, Mohammed. Feelings are reciprocal. Thank you very much. God Thank you, bless. sir. Jai Hind, sir. Jai Hind, buddy. Bye-bye. Bye. God bless. Bye, sir. It's been a while. Thank you, sir. Bye-bye.